everyone and welcome back to my YouTube channel. So in today's video मैं आपके साथ share करने वाली हूँ how I edit my YouTube thumbnail and how I create my YouTube thumbnail, what all the things that I do and what all the application apps that I use to create and edit my thumbnail. So yeah, if you're interested then please keep on watching. Before starting this video, I want to give you a little information that this video contains all new techniques and new tricks and new application that I'm using for creating the thumbnail, but I have already uploaded one video. I will share the link here. And this is the video, so you can check this video as well. You will get other different kind of techniques and tricks to create a YouTube thumbnail. So yeah, जो भी आपको tricks and जो भी चीज़ें आपको पसंद आती हैं दोनों वीडियो में से, you can just use them to create your own thumbnail. And yeah, that's it. Now let's get started. So I shoot my videos with my mobile phone, so I will not able to do demonstrate everything, but I will share the screen recording here for better understanding. But I have noted down everything in this notebook, so yeah, I will be seeing a lot here. But yeah, first thing I want to mention that I use 3 applications to create my thumbnail, which is PicsArt, Canva and Vita app. And these are the 3 applications I use for different purpose. So first let's start with the PicsArt app because it is like a first step. So I use PicsArt for cropping the picture or to make a perfect collage. Actually fitting the thumbnail picture in the right ratio, which is 16:9, तभी वो perfect fit आएगा and कुछ भी आपका crop नहीं होगा. So yeah, so I use PicsArt for that, and this I do in 2 ways. First, if you have any picture which you want to use in your thumbnail, you can just open that picture in PicsArt app, and then you can choose the option tools, and from there you can choose the option crop. And यहाँ पे आप खुद से भी crop कर सकते हो, but I will suggest you to choose the ratio जो आपको नीचे मिल जाएगा. Choose the ratio 16:9 and वो automatically 16:9 का आपको क्रॉप करके दे देगा, एंड यू कैन जस्ट एडजस्ट इट. बिकॉज अगर बाद में आप डायरेक्टली यूट्यूब में अपलोड करोगे तो मे बी आपका मेन पार्ट क्रॉप हो जाए एंड आप वहाँ पे एडजस्ट ना कर पाओ. सो यू कैन डू दिस इन PicsArt ऐप. But if you don't want to crop your picture, this is something that I prefer is I use this fit option जो आपको PicsArt में नीचे मिल जाएगा. You have to click on that. It is something that will fit your picture in that particular space. I don't know if I'm explaining it right, but you can see here in the video. Now again you have to choose the ratio 16:9, so it will automatically fit your picture in that ratio. Now यहाँ पे वो white background के ऊपर आपका picture fit करेगा. But here what I do is that I choose this image option in the bottom. उस पर click करना है and then you have to choose your own picture. So background में आपका खुद का picture आ जाएगा. Now you have to make sure कि आप blur का amount पूरा कम कर दे ताकि picture like full picture दिखे, and again you can just adjust it the way you want. And मैं हमेशा ऐसी picture click करती हूँ जिसमें space हो, ताकि जब मैं ये effect use करूँ तो ऐसा मिला लगे कि हाँ लाइक एक ही पिक्चर है, अलग का पीछे कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लगा है. So yeah, this is something that I prefer, and this is why I use PicsArt, because you have to fit your picture in this 16:9. Otherwise it will crop, and कभी बैन पार्ट भी crop हो जाता है. And also make sure कि आप ऐसे tilt करके पिक्चर ले, लाइक लैंडस्केप में आप पिक्चर ले, पोर्ट्रेट में ना ले, तो और जब भी ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको क्रॉप करने में. एंड या दैट्स व्हाई आई यूज PicsArt. And sometimes I also create this type of thumbnail collage wala, so for that also I use PicsArt, but I already explained the collage functions in my first video. So if you want to know more about that, you can check out that video. Now second app that I use is Canvas, and this is something that will change my thumbnail completely. Now I use this
application to add the font and tags which goes because this application has some amazing tags. So what you have to do, you have to just open the Canvas app. Now you have to click that प्लस साइन वाला बटन, देन वहाँ पे आपको चूज़ करना है यूट्यूब थंबनेल. सो आपको अगेन यहाँ पे क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यूट्यूब थंबनेल का आपको रेशियो क्रिएट करके देगा. नाउ यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपना खुद का पिक्चर अपलोड कर सकते हो लाइक जो हमने पिक्सआर्ट में क्रिएट करा था, या तो फिर आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप उनको एडिट कर सकते हो और उनमें आप अपना पिक्चर ऐड करके आपको रेडीमेड थंबनेल मिलेगा, तो आप ये भी कर सकते हो. बट आई प्रेफर टू यूज़ दोज पिक्सआर्ट में जो मैंने एडिट करे पिक्चर. सो फॉर दैट व्हाट आई यूज इज आई चूज द ऑप्शन अपलोड एंड आई अपलोड द पिक्चर दैट आई एडिट इन द पिक्सआर्ट ऐप. नाउ आई विल एडजस्ट इट in this ratio and again I will click the plus sign and वहाँ पे आपको नीचे scroll करना है and you will see the text option. You have to click on that and you will see so many amazing text option, neon वाले and bold tags, very attractive tags that will look amazing in your thumbnail and it will pop up and will attract your audience. So you can choose any text you want. I mostly use this neon one, so I will be choosing that one. Now choose करने के बाद you will see नीचे बहुत सारे option like you can edit this text आपके according. But मैं दो steps में ज़्यादा ध्यान रखती हूँ. कभी कभी मैं color change कर देती हूँ, कभी कभी मैं font change कर देती हूँ. So yeah, that's what I do. But you can actually play around with so many options you can see in the bottom. Now यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप जब इस टाइप के टैग्स यूज़ करेंगे जहाँ पे दो डिफरेंट फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं एंड कभी कभी आपको उसका ऊपर वाला फ़ॉन्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको नीचे अच्छा नहीं लग रहा है. सो व्हाट यू कैन डू, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हो एंड देन यू कैन चूज द डिलीट ऑप्शन एंड उसमें से यू कैन सेलेक्ट द डिलीट एलिमेंट विच विल डिलीट दैट पर्टिकुलर पार्ट. बट इफ यू सेलेक्ट द डिलीट ग्रुप ऑप्शन इट विल डिलीट complete tags. So yeah, that's what I want to mention and that's the next application that I use to edit my thumbnail. And the last application that I use to edit my thumbnail is to add some tags and sometimes some aesthetic effect. So the last application that I use is Vita app. I know it is like a video editing app, but I use this to edit my thumbnail and how I will share with you now. So what you have to do, you have to open the Vita app and then select the new project option and उसके बाद you have to select the image option, not the video one. and यहाँ से आप अपनी image select कर सकते हो. आपके पास ऑलरेडी आपने अगर लैंडस्केप पे क्लिक करी है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, या फिर पिक्सआर्ट में जैसे मैंने एडिट किया है अगर आपने वैसा कुछ बनाया है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो. नाउ आफ्टर सेलेक्टिंग द पिक्चर व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑप्शन जो आपको नीचे मिल जाएगा एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू सेलेक्ट द कैप्शन ऑप्शन एंड आप देख सकते हो वहाँ पे बहुत अच्छे फॉन्ट एंड आपको कैप्शन के ऑप्शन मिल जाएंगे जो आप अपने थंबनेल में ऐड कर सकते हो. सो यू कैन चूज एनी वन यू वांट. आई रियली लव दिस येलो वन, इट लुक्स सो aesthetic and also this pink one. So yeah, after selecting the caption you can add the text in the keyboard option, whatever you want to write in your thumbnail, and yeah, that's it. And the second thing that I like to add through Vita app in my thumbnail is the effect. So नीचे आपको effect का option मिल जाएगा, you have to click on it and you will see like a retro option. So वहाँ से आप इफेक्ट ऐड कर सकते हो, एनी इफेक्ट यू लाइक एंड बहुत सारे इफेक्ट के ऑप्शन है. सो जो भी आपको इफेक्ट ऐड करना है आप वो चूज कर सकते हो. नाउ एज यू कैन सी द टेक्स्ट एंड इफेक्ट इज एडेड टू द पिक्चर एंड इट लुक रियली अमेजिंग. But it's a video, it's not a image. So what I do is that I take a screenshot and I crop that part. And the best part is that कि video भी 16:9 में होती है, so I don't have to crop anything. So yeah, I just take a screenshot and crop that particular part and I save that
to my camera roll, and yeah, I use it as a thumbnail. But I'm not 100% sure with the screenshot thing, but it works really great for me. As you can see, I have created so many thumbnails with this application. So yeah, you can try this as well, and please let me know if it's worked for you or not. I would like to know that. And yeah, that's it. That's how I added my YouTube thumbnail using these three apps: PicsArt, Canvas and Vita. And yeah, that's all for today's video, and I really hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो. अगर ऐसा हुआ है then please like this video and subscribe to my channel, and you can comment down the feedback for this video or anything that I missed and you want to know how to do that. Let me know in the comment section below, and I will definitely try to make a video on it अगर मुझे उसका आंसर पता होगा. So yeah, that's all for today's video. Thank you for watching my video. I'll see you in the next video. Bye.